हाय गाइस, लास्ट टाइम आप लोगों ने हमें कुछ क्वेश्चंस भेजे थे जो कि आप मारुति सर से पूछना चाहते थे। आज इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। सो वेलकम मारुति सर। हाय, वेलकम। सर थैंक यू। या हाँ। तो सर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन सर संदीप का है। ही इज आस्किंग कि हाउ टू मैनेज कैट प्रिपरेशन विद फुल टाइम जॉब। वो चाहे कितना भी टाइम दे ले, कितना भी टाइम सेव कर ले, उसकी जॉब इतनी हेक्टिक है कि वो 1 या 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं निकाल पा रहा है कैट प्रिपरेशन के लिए, और उसका ये मानना है कि वो सफिशिएंट नहीं है 1 या 2 घंटे। तो वो कैसे मैनेज करे सर टाइम? मुझे लगता है कि उसमें दो चीजें हैं। एक, कोई भी जॉब इतना हेक्टिक नहीं होगा कि आउट ऑफ 24 आवर्स तुम्हें सिर्फ 1 घंटे या 1.5 आवर्स मिल रहा है। ओके, वो शायद हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा डिफिकल्ट, वो नामुमकिन है। मुझे लगता है कि देयर आर मेनी एरियाज जहां पे यू वेस्ट टाइम विदाउट नोइंग दैट यू आर वेस्टिंग टाइम। फॉर एग्जांपल, इफ यू कीप ट्रैक ऑफ हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन योर फोन, काफी ज्यादा एप्स है जिसमें तुम ट्रैक कर सकते हो कि कितना टाइम यूज कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो उस पर। मेरा नॉर्मली, मैं जब भी चेक करता हूँ, मिनिमम 5 आवर्स ऑन द फोन वेस्ट होता है, मिनिमम। ओके, ऑन ए डे टू डे बेसिस। और मुझे लगता है कि मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करता। ठीक है, मैं मतलब डिलिबरेटली मैं ट्राई करता हूँ उसका कम यूज करें। ठीक है, फिर भी मेरा एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स एवरी डे होता है। ओके, मुझे लगता है कि काफी लोग विदाउट इवन नोइंग स्पेंड 7 to 8 आवर्स ऑन देयर फोन, जो मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है। For 2 reasons. One, if you don't waste the time on the phone, even if you're not studying, कभी कभी हो सकता है कि तुम कोई ट्रेन में जा रहे हो या कोई बस में जा रहे हो, तुम्हारे पास कुछ करने की ये नहीं है, और you can't study at that time. Even then, if you just think, okay, even if at that time you close your eyes, okay, you will feel better rested. So whenever you're studying, you will study with better concentration. तो उस टाइम पे if you're just watching some reels or something like that, your mind will not get any rest. So वो मुझे लगता है कि there is a big scope for at least getting 1 to 2 hours extra every day by just avoiding your phone completely. वो मुझे लगता है कि काफी लो हैंगिंग फ्रूट है। वो इतना सैक्रिफाइस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको बोलूँ कि जॉब छोड़ दो या ये वो, इतना डिफिकल्ट डिसीजन भी नहीं है। अगर तुम वो कर रहे हो तो काफी लोग बोलेंगे कि वो अच्छी बात है। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग आई वुड ऑलवेज से, रिमूव योर स्मार्टफोन, फाइंड और टेक ए नॉर्मल फोन। That itself will ensure that you are better rested, you get better sleep, you will also find yourself having more time. The second thing I would say is, out of 24 hours, ऐसा नहीं होगा कि you can't find 2 hours. Okay, there will be ways. All I'm asking is 2 hours every day consistently at the same time. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज सुबह पढ़ा, कल शाम को पढ़ा, परसों दोपहर को पढ़ा, because वो consistency काफी important है। Your brain and your body should know कि okay, सुबह मैं पढ़ रहा हूँ, इस टाइम पे मैं पढ़ रहा हूँ। जो भी आ जाए वो मेरा काफी इंपॉर्टेंट टाइम है, उस टाइम पे मैं पढ़ रहा हूँ। ओके, ये काफी ऐसा होता है वेयर इवन इफ यू लुक एट ट्रेडिशंस, ओके, मेनी टाइम्स पीपल डू सर्टेन थिंग्स एट ए पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज वंस इट बिकम्स योर हैबिट, यू विल एंश्योर दैट यू डू इट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, वेदर इट इज गोइंग टू अ टेंपल, वेदर इट इज टेकिंग अ बाथ, एनीथिंग, व्हेन यू आर डूइंग इट एट अ स्पेसिफिक टाइम, इट इज ऑलवेज इजी टू हैव दैट हैबिट। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फाइंड 2 hours, ओके, so that you study at that particular time. There are different ways in which you can figure out 24 hours में मेरा टाइम कहाँ पे जा रहा है। Worst case scenario, if it so happens that देखो मुझे कुछ टाइम नहीं मिल रहा है, मैं like super efficient हूँ, but I'm getting only 1 hour, I would say put that 1 hour and then hope for the best. I can't really say anything else. Okay, but I would just say that that is very unlikely. If you try to find where your 24 hours are going, okay, you will be able to extract at least 2 hours for your CAT preparation. श्योर सर। और एक मोटिवेशन भी एक काम करता है। अगर आपको लगता है कि आपको इस भी स्कूल में जाना ही है, करेक्ट, यू विल फाइंड सम टाइम फॉर दैट, राइट? एग्जैक्टली, राइट। सो एक और क्वेश्चन आया है कमल का। Before we continue, because you said this, I remember, okay, like around 4-5 years back, okay, I put on a lot of weight after lockdown. Okay, I wanted to lose weight, and I was very determined to lose weight. Till then, every day in the night, okay, I used to watch one web series. We used to watch one episode of web series. Okay, there is one series called Hercule Poirot. Okay, Poirot. It is based on Agatha Christie's novel. So every day we used to watch it. Okay, from 10 to 11 p.m. and then I would sleep. I would wake up at around 7 p.m. Okay. But when I wanted to lose weight, and that was very important to me, I really enjoyed it. Okay, it was like a very calm detoxing. But I stopped doing it. I started sleeping at 10, so that I would wake up at 6, and then I would cycle. Okay, it is basically a sacrifice. So you do it. And I chose to cycle instead of watching that, even though I enjoyed both. And I lost weight. Like many people know, I lost around 10 kgs in 1 year. Oh wow! Because I was consistently doing it for a year, and I lost weight. That's so good. So sir, next question है कमल का। वो जानना चाहता है कि सेक्शन वाइज हम क्या करें ऑन द डेली बेसिस, कि उस
सेक्शन को एस कर पाए. Let's start with the VRC, then DLR, then quants. So VRC में क्या चीजें हैं जो उनको डेली बेसिस पे करनी चाहिए टू एस दिस सेक्शन? ओके, पहला मैं बोलूंगा कि बिफोर यू लुक एट रोज रोज क्या करना चाहे या डेली क्या करना चाहे, उसके पहले मैं बोलूंगा कि साइकोलॉजिकली आई लाइक द वे यू आर फ्रेजिंग इट कि उसको एस करना है. Yeah. पहले वो डर हटना चाहिए कि देखो वर्बल में मुझे कुछ भी करके आई हैव टू गेट 90 परसेंटाइल, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर तुम उसको अप्रोच कर रहे हो कि मुझे वर्बल में 99 आना चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है. Yeah. ताकि तुम्हें पहले विश्वास हो कि मैं एक्चुअली 99 स्कोर कर सकता हूँ. Yeah. ओके, नाउ कमिंग टू VRC, ये मैंने काफी देखा है, मैं काफी अपने आप को भी देखा है कैसे मैंने इंप्रूव किया. क्योंकि जैसे मैंने बताया था पहली बार जब मैंने कैट दिया था मेरा इंग्लिश काफी खराब था. Yeah. ओके, और मेरा वर्बल स्कोर आल्सो वाज रिफ्लेक्टिव ऑफ इट, क्योंकि उसमें भी नंबर्स कम ही आए थे. बट उसके बाद मैंने काफी फाइट मारा उस पर, वो इंप्रूव हुआ. अभी जब भी मैं देता हूँ आई डोंट लुक एट वर्बल एज ए वे इन विच मेरा स्कोर कम होगा. मैं वर्बल को अपना स्ट्रेंथ भी नहीं मानता, टू बी रियली ऑनेस्ट. ओके, बट उसको मेरा वीकनेस भी नहीं मानता. ऐसा नहीं है कि आई हैव टू लाइक समहाउ सैल्वेज इन क्वांट एंड LRA. आई फील दैट आई विल डू वेल इन verbal, but I'll do better in quant. Okay, that is what I look at it. Now coming to what somebody should do to improve in verbal, I have noticed that reading habit is very, very useful. Extremely useful, and it improves the accuracy, the comprehension skills quite a lot. What I have noticed happened to me was, in certain topics which I was interested in, I was able to concentrate. But in topics I was not interested in, I was finding it difficult to concentrate. Like after reading 2-3 paragraphs, I was steadily forgetting what I read. Or I was losing the concentration. I just didn't know where I was. Okay. Then you also panic a little. Then you again go back and you try to read. Yeah. So doing it 2-3 times is a waste. It is very inefficient way of actually solving RCs. Yeah. So for that, what I realized is, if it was a topic I had some interest in, Okay. or I had some knowledge in, for me to actually focus and concentrate was easier. So what I decided from that standpoint was, every day I'll read some articles. Okay. Articles from different websites from different topics. Okay. ऐसा नहीं होना चाहिए कि I am going to read only sports related things or politics related things. Anything that is interesting is not what I would read. I would read things about variety of topics. Especially, like I mentioned to many people, I would read boring topics. Okay. In 2020, for example, in CAT 2020, I scored close to 100 in LRDA, close to 100 in quant, but I scored 97 in verbal. Okay. So I didn't get 100 in CAT 2020. Yeah. So that year I realized that verbal में मेरा थोड़ा I can improve. So that one year I used to read a lot of this architectural digest, which I used to find very boring. Okay. But I realized that if I'm able to concentrate better, okay, in a boring article, my concentration in normal ones will improve quite a lot. And that helped me quite a lot. After that, I'm scoring close to 100 in verbal also, because my RCs also have improved. My RC comprehension skills, my concentration skills have improved. So I would always suggest, do 2 things in verbal. One, read a lot, read every day. Okay. Okay, don't read fiction, read non-fiction. Okay. Read from a diverse variety of topics. Okay. It should not be the same topic every day. Yeah. That is, it should not be only about philosophy. It should not be about only current affairs. It should be about random things. Okay. Yeah. For example, you should know that, okay, science and technology is important. Okay, Yeah. philosophy is important. Yeah. Okay, current affairs is important. Okay, there are different topics from which CAT का आर्चेस आते हैं. हर टॉपिक में तुम पढ़ सकते हो. Okay, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर दिन एक ही टॉपिक पे पढ़ रहे हो. वो एक चीज है. दूसरी चीज है कि जितना बोरिंग आर्टिकल है उतना अच्छा है तुम्हें कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए. ठीक है, ये दो अगर तुम कर रहे हो डेली, इफ यू आर रीडिंग से 4 or 5 आर्टिकल्स एवरी सिंगल डे, you will notice within 2 months your concentration levels have improved with respect to reading comprehension. That is sufficient. And I would like to like add one more point here. You used to say कि don't say that I am weak in VRC. Correct. Always say I need to improve in this. Correct. I can improve in this. So Correct. this psychological mindset also plays a important. Correct. 100%. I know that it happened to me. It happened to many people also. The more you like fear something or because you don't realize it, but तुम अपने आप का बात काफी ज्यादा सुनते हो. Yeah. Okay. In 24 hours, I talk to myself quite a lot, at least mentally. Okay. So if you are telling that, you are demotivating yourself without knowing it always. Yeah. So that is not how you should approach anything. Okay. You should tell yourself, you should motivate yourself that this is where I'll improve. This is where I can improve. This is where I can score a lot of marks. Okay. Yeah. Those things will change the way you look at a section. वो काफी important है. Sure, sir. So, And coming to quant and LRD, on DLR, okay, how many sets one should solve in a day if he is a working professional or versus if he is a fresher sitting at home or a college guy? How many sets you think he or she can manage? Normally, I would say that whatever I suggest can be done by both working professionals as well as with freshers. Okay.
Because reading 3 or 4 articles, for example, in VRC, even if you're going in a metro, you can read it. Okay. Yeah. Similarly, for DLR, I would say minimum I would want you to solve 2 sets. Okay. 2 good LRDSX every single day, I think is a very good start. Okay. It also depends on how much effort you put in to solving these sets. Yeah. Like there is one example I tell people. Suppose somebody is going to a gym. Suppose they want to get into a good shape and all. Yeah. Okay. Now, if you are just lifting something which is very light, okay, even if you're doing it 100 times, that repetitions, it won't help you at all. Yeah. But suppose you are trying to push a stone, which is very heavy. The stone is not moving at all. Still, if you put a lot of effort, your muscles will build. Yeah. Right? So even if there is a DLR which you're not getting, if you immediately watch the video solution, okay, it won't help you quite a lot. Okay. First, I will say struggle a lot. Okay, try to solve it from different ways. Okay. Then look at the video solution. Okay. Then you will immediately realize and you will remember also whatever strategies that we used or whatever solution we used, whatever method, that will stick in your mind for longer. Okay, so I would say put effort in solving on your own, and after that look at the video solution. Okay. 2 sets in DLR, I think consistently is a very good start. You can increase it later as CAT comes closer. Yeah, sure, sir. So 2 sets. Correct. Till CAT, right? Correct. Okay. So now quant section. Quant, I would say around 15 questions, 15 to 20 questions daily basis. 15 I think is pretty good. But again, like I mentioned always, it is consistency. Yeah. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन 20 क्वेश्चंस किया, उसके बाद छोड़ दिया, फिर 1 हफ्ते के बाद फिर से चालू किया, बिकॉज वो होगा ही नहीं. किसी चीज में ओके कुछ भी करना है तो वो हैबिट काफी इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है कि तुम अगर थोड़ा ब्रेक ले रहे हो, वो टाइम ऐसा वेस्ट हो जाता है, वो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है. वो उस पे मुझे लाइक आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन दैट. ओके, सो डू 15 क्वेश्चंस इन क्वांट एवरी डे, 2 LRDSX every day, read 3 or 4 articles every day, and try to take some mocks or sectionals once in a while. या तो सब मॉक्स से याद आया, एक और क्वेश्चन है हमारे पास. उसका ये कहना है कि आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय सिलेबस येट. ठीक है, तो शुड आई स्टार्ट गिविंग मॉक्स राइट नाउ और शुड आई वेट टिल आई कंप्लीट माय सिलेबस, और लाइक as most of the people say you should start taking mocks in August or something, from August or something, right? So will it be a good strategy if he starts taking mocks now? I would say take mocks now, okay? Don't take a lot of mocks, but I think you can definitely take 1 mock every 2 weeks or 1 mock every 2 weeks from now on. Okay. Because the way I look at mocks is 2 things. Once you're taking mocks, your fear of the exam will go down. Okay? If you're not taking mocks, you don't really know how you're preparing. Yeah. If you're taking mocks, you have some benchmark. ठीक है, मेरा मॉक में इतना स्कोर आ रहा है, मेरा ऐसा चल रहा है, इसमें मैं थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ, इसमें मैं थोड़ा इंप्रूव हो सकता हूँ, ऐसे. Secondly, I look at mocks as a diagnostic test. Okay, अगर तुम्हें कुछ बीमारी आया, तुम्हें कुछ फीवर आया, तुम्हें पता नहीं कि क्यों आया. Yeah. तुम अगर ब्लड टेस्ट नहीं लोगे तो तुम्हें कैसे पता चला कि क्या मतलब इंप्रूव कर सकता है, क्या कर सकते हैं. Exactly. तो मैं मॉक को ऐसे ही देखता हूँ. ऐसा नहीं है कि मॉक से कुछ भी बदलता है, कुछ नहीं बदलता है ना. मॉक इज जस्ट ए वे इन व्हिच यू कैन फिगर आउट वेदर व्हाट यू आर डूइंग, हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग. Then if your scores, then you also can figure out what to do better. Yeah. Like again in a diagnostic stage, if you feel okay, I have to lose weight or I have to do this, I have to do that, you figure out what has to be done. Yeah. Mock also should be looked at it that way. Don't worry too much about it. Okay sir, I'm sure that would help him. So next question की तरफ चलते हैं. उसका ये कहना है कि already May start हो गया, right? Most of the people have started their preparation in January itself. So वो कह रहा है कि am I too late to start CAT preparation right now? So no, I don't think it is too late. I think somebody who started in January will definitely have an advantage, if I'm being honest. Okay, because January में अगर स्टार्ट किया और अगर वो अच्छा कर रहा है, वो डेली कर रहा है, तो उसके प्रिपरेशन में ऑलरेडी थोड़ा मोमेंटम है. Yeah. Okay, उसको थोड़ा पता है कि सिलेबस क्या है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उसको थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी है एग्जाम के बारे में, ज्यादा इन्फॉर्मेशन है एज कम्पेयर टू somebody who's just starting now. Yeah. Somebody who's just starting now, suppose they haven't taken CAT, for them to actually get into that zone of preparation, it is going to take them some time. Okay, but that some time has to be taken. ऐसा नहीं है कि you can do anything about it. Okay, अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो तो शायद तुम्हें इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा वीकनेस क्या है, ये सब जानने में थोड़ा टाइम लगता है. बट हैविंग सेड दैट, व्हाट एल्स कैन यू डू? आई वुड जस्ट से दैट इट इज नॉट टू लेट फॉर श्योर. मई से कैट तक यू हैव मोर देन 6 months, which if you put in good effort is sufficient time for you to improve significantly. I would just say don't waste any more time. Okay. मई से नवंबर तक उसी को एक तपस्या मानो. Okay. Yeah. जो भी तुम करना चाहते हो वो मैं एक्चुअली बिलीव करता हूँ कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, okay, हमारे इतिहास के बारे में, जैसे कि अर्जुना डिड तपस्या. Yeah. What does it mean? तो उसके बारे में मुझे बचपन में समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में मुझे लगा था कि ओके वो तपस्या अगर कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि उस किसी एक काम पे काफी फोकस कर रहा है. Yeah. उसी को वो काफी प्रैक्टिस कर रहा है. ओके, तो he will become very good at it. This also I feel if you are planning to do anything, you have to do a tapasya, which is I think a good way of looking at any exam preparation. Sure sir. Yeah.
So next question is sir Sharan ka. He's basically it's a profile related question. He's saying I have nothing in my profile. How should I build one till cat? Okay. Right. What are the things that he can do to build his profile? In general, I would say that building your profile should be done with something you are interested in. Yeah. Okay. ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें उसमें जो भी कर रहे हो उसमें तुम्हें थोड़ा मजा आ रहा है. Okay. तभी तुम उसको कंसिस्टेंटली करोगे, तभी वो अच्छा दिखेगा प्रोफाइल में भी. तो पहले उसको आइडेंटिफाई करना है कि उसको क्या अच्छा लगता है. ओके. कुछ तो चीज उसको अच्छा लगता है ना. उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मुझे मूवीज देखना अच्छा लगता है. वो नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगेन कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज डूइंग. ओके. लाइक आई टोल्ड यू, आई वाज साइक्लिंग, राइट? I enjoy cycling, so I am doing it consistently. Okay, if I say don't enjoy cycling, for example, बीच में मुझे लगा था कि I wanted to run, but I don't enjoy running. So I tried it for 2-3 days and then I quit it. Okay. But because I enjoy cycling, I do it regularly. In a similar way, if somebody is looking to build their profile, try to join some NGOs. Okay, try to join something or the other, but ensure that you are enjoying it. You might enjoy the job itself, the work itself, or you might enjoy the company, other people who are in part of it. But something or the other should be interesting for you. If you, for example, like sports, okay, maybe play regularly and join some small team. Okay. For example, I know people who play chotu games like frisbee and all, even in Hyderabad. Okay. Even in other cities, and they participate in national tournaments because it's a very small niche sport. You can actually join and do it. Okay. Then it will look good. If you say that, okay, I play frisbee and I'm part of, or I participate in a few national tournaments, 1 or 2 national tournaments, it will look different. Okay. Rather than saying, okay, I like to play frisbee, I played once in a while, doesn't look as good. You see what I'm saying, right? So you have to look at both the impact also. Try to select something which is niche so that you can go slightly far. And it is not very difficult also to identify it. Okay. But you should enjoy it. Having said that, right now your focus primarily should be on cat. Okay. That is the very big differentiator. Even if your profile is very good, but your cat score is not good, it won't matter. Okay, perfect. So next question is Shivam ka. He's saying I have poor accounts. Sorry, very poor accounts. Okay. And he's losing confidence because even if he get good percentile, he won't get any good B-school polls. So he's feeling demotivated right now. So what are the things that you want to say to him? देखो, मैं एक चीज तो बताता हूँ कि वो जो भी है अकैट्स, ओके, इवन इफ उसको लगता है कि वेरी पुअर है, शायद इतना पुअर नहीं है. हम अपने आप को, मतलब अगर हम कंपेयर कर रहे हैं विद 999 काइंड ऑफ पीपल, सबको लगता है कि ओके, इसका प्रोफाइल में ये अच्छा है, इसका प्रोफाइल में वो अच्छा है. लेकिन मुझे लगता है कि काफी नॉर्मल पीपल ऑल्सो टेंड टू डू वेल इन लाइफ. ओके, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अकैट्स विल डिटरमाइन वेयर यू रीच इन लाइफ. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज अकैट्स हो गया, अभी तुम उसको बदल नहीं सकते हो. ओके, तो उसके बारे में इतना ज्यादा सोचना मुझे नहीं लगता कि इज प्रोडक्टिव. You have to try to do things which are productive. तो अभी तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में 2 चीजें हैं. एक तो वर्क एक्स बढ़ा सकते हो, okay? उससे तुम्हारा जो कैट परसेंटाइल रिक्वायर्ड है वो कम होगा. सेकंड है कि कैट परसेंटाइल बढ़ा सकते हो. तो ये दोनों में फोकस करो. अगर तुम डिमोटिवेट हो रहे हो तो तुम अपने आप को बोलो कि देखो, काफी लोग मेरे जैसे हैं. One way which I can actually gain an edge is by not being demotivated. Just by not being demotivated itself, just on the basis of that one fact, okay, you will get an edge. Because there are many other people with similar profiles who will be very demotivated and do nothing. You at least don't be demotivated so that you start studying, if not today, maybe tomorrow or day after tomorrow. Correct? Yeah. Sir, एक और last question मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि how should the approach to the CAT exam differ for a fresher as compared to the repeater? Because repeater ने mostly क्या होता है कि syllabus उनका completed है, concepts उनके clear हैं. वो अब इन 7 to 8 months में क्या करे, और फ्रेशर जो अभी स्टार्ट कर रहा है कैट प्रिपरेशन फ्रॉम द मे इटसेल्फ, वो टिल कैट तक क्या क्या चीजें करें? ओके, मैं पहले बोलता हूँ दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज. ओके, फ्रेशर का एडवांटेज है कि उसके पास शायद टाइम ज्यादा होगा. अगर वो अभी कॉलेज में है, कॉलेज में लोग बोलते हैं कॉलेज में मेरा टाइम नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं वर्क एक्स में कितना कम टाइम मिलता है. सो जो भी कॉलेज में है उसके पास काफी ज्यादा टाइम है. इफ ही उसको अच्छा इस्तेमाल करेगा तो वो एक एडवांटेज है. सेकेंडली, वो टाइम को अगर वो अच्छा बेहतर इस्तेमाल कर सकते, उसके ऊपर इतना रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं है. जो भी काम कर रहे हैं उसको वर्क प्रेशर भी होता है ना. उसको ये भी लगता है कि ठीक है, मेरे पेरेंट्स मुझ पे थोड़ा ये भी कर रहे हैं. ओके, देयर इज रेस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर आर अदर थिंग्स. ए फ्रेशर कैन गिव एग्जाम विद ए क्लियर माइंड. देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ प्रेशर, ओके, दैट शुड बी देयर ऑन हिम और हर. So that is the advantage. Now, with respect to somebody with a repeater who has actually taken CAT, they also have, in my opinion, an intangible benefit.
The intangible benefit is if you're taken CAT once or twice, you know things about the examination. You know, for example, how many marks are needed. You know, like what are the good colleges. You know how to prepare. Roughly, you know. Okay. You know what kind of questions are asked. You know the syllabus. You know many of the concepts. So these things, for somebody who has not taken CAT, will not know all of this that intuitively. Yeah. That also is an advantage for a repeater. Okay. Now, recognizing these two advantages, what I would ask the repeater to do is very simple. A repeater should focus on solving. Yeah. That is one. Secondly, a repeater should get into that psychological frame. कि he should believe that he can do well. Yeah. उसको लगना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ. And he should also prepare himself mentally for the exam day. Yeah. Mentally prepare himself even before the exam, okay, regularly, and solve as many questions as he can. Because when you solve questions, that is when your confidence will increase. If you're just watching videos or if you're solving questions only from a particular topic, then your confidence will not be improved. You have to keep solving. Very, very important for repeaters. Yeah. For a fresher, I would say focus on building concepts, okay? If you have more time, okay, use the time to understand more about the examination, solve some previous year's papers so that you get that information about whatever I told the repeaters have. Yeah. Intangible things, like what are the kind of questions that are asked, what are the cutoffs, what are the good colleges, all of those things about the system, about the process, they should first get that, and then they can start preparing very well. So thank you so much, sir, for answering these questions. Yeah. I hope you got your answers. So thank you so much for tuning in, and please don't forget to subscribe our channel, like this video, and share this video with your friends. And if there is any question that we haven't covered and you want us to answer, please comment below this video. I look at all the questions and I'll try to reply back in the comments itself.